Still remember one day, Badabhai came to me and he gave me a poem. Okay. So he said, Hamza, this is a gift for you. You start dying slowly when you do not risk the safe for the uncertain. But in your college time as well, like were you thinking यार मैंने खुद कुछ करना है काम आगे जाके, या वो था कि नहीं बस यहाँ से फारिग हुए कुछ जॉब्स लाइक जॉब इंडस्ट्री में जाना है? Everyone in the family, it's like a prerequisite कि आपको at minimum doctor तो होना ही चाहिए. So, but entrepreneurship was there since the very beginning. If I was in a situation के I had nothing in Pakistan, फिर तो वहाँ जाके develop करना बिल्कुल एक बनती थी. But Pakistan had given us so much. Yeah. और वहाँ से फिर what happened within a year? So 2021 में you started. So you pivoted in 2022 end. COVID आ गया. So जैसे ही COVID आया, it was a huge opportunity. So we built the COVID PCR lab, and that lab became the largest aggregator of samples. So cool. I had just started. I was full of passion, and I came to you, and I was like, I'm ready to serve 220 million Pakistan. Your co-founder is your wife. So how is that sort of relationship? Like you guys are a couple, and then in the business as well. Because I knew my wife before we got married. So कुछ ज़िंदगी के ख्वाब इकट्ठे देखे थे, उनको अचीव किया, थ्रू आवर एजुकेशन अचीव किया, डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव किए, एंड एक वो थॉट प्रोसेस बन गया हुआ था दैट टुगेदर वी कैन अचीव द हाईएस्ट ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्कर देम. हमने सिलिकॉन वैली का मॉडल जो है वो पाकिस्तान में रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि हम हाई बर्न मॉडल्स बनाएंगे, इनके पास हमेशा अवेलेबल कैश होगा. जब आपकी इतनी बड़ी यूज़र बेस हो जाए तो अगर आपको एक माइन्यूट प्रॉफिट भी उसके अंदर से आना शुरू हो जाए तो दैट टर्न्स द होल गेम अराउंड. ठीक है. बट इतनी बड़ी यूज़र बेस तक पहुंचने के लिए यू नीड कंसिडरेबल मनी टू बर्न, राइट. और फिर ये भी है ना कि उस कॉम की कैपेसिटी टू स्पेंड मनी एज वेल. Yes. I think this is we are very lucky to be present in this time and in this region. So I think the present day Rome is coming to our neighborhood. हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड. आज हमारे साथ एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं और कुछ अर्सा पहले इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने एक मुझे आइडिया बताया जो मुझे आधा समझ आया आधा नहीं आया, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. एंड रिसेंटली इन्होंने एंड ऑफ लास्ट ईयर जो है वो पिवट किया. सो ही इज़ इनटू द स्टार्टअप इकोसिस्टम, और आई थिंक ये उन लोगों में से नहीं है जो हर तीसरे हफ्ते आपको इवेंट्स में मिलें. ये कुछ उन लोगों में से हैं जो एक्चुअली काम करते हैं एंड ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग बिग. सो टुडे वी हैव हमजा विद अस. हमजा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you, Talha. It's an honor to be here. No, thank you. या हमजा, मुझे थोड़ा सा बिफोर वी गो इनटू द वर्क, ये वो सारा थोड़ा सा अर्ली एजुकेशन कहाँ. आई थिंक यू आर लाहौरी. Yes. You're pure Lahori. I'm a pure Lahori. Sahi. So my primary education has been from Edson, and then I went to Lahore Medical and Dental College for my further education. And post that, I've been doing entrepreneurship and practicing. HSN कैसा था? Because I don't know किसने, मेरे ख्याल से मैंने मिफ्ता इस्माइल के साथ किया. उसने कहा कि 90% पाकिस्तान जो ना वो HSN नहीं चला रहा है. I'm not sure about that, but yeah, I agree with that, but I don't think I don't know why this is a wrong correlation. I think वो probably the perception is कि यार ये सारा elitish वहाँ है, but which is not true. There's a scholarships, there are people from Waziristan as well. Correct. And I also feel that Edsonians are good decision makers. So when they come to a position of authority, people shy away from taking decisions. So Edsonians are groomed and taught the way that they can lead from the front. लेकिन थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो चाइल्डहुड था वो किस तरह का था, बिकॉज अभी तो आजकल बड़ी वो खौफ की एक फ़ज़ा है, बट व्हेन यू वर किड, लाइक हाउ वाज लाहौर बैक देन? Lahore was absolutely fantastic. And while we were studying in Edson, so I still remember हमारे principal की एक बड़ी famous saying थी that there is no fear within the boundaries of Edson. So we grew in an environment where we were like fearless people looking for opportunities and taking risks. So it was a nourishing environment. एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आपको प्रिपेयर करते हैं अपनी अगली ज़िंदगी के लिए, दी एक्चुअल लाइफ दैट यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू. उसके लिए हर तरीके से, फ्रॉम हाउ टू चूज़ टीचर्स टू चूज़ फ्रेंड्स, हर चीज़ का आपको अच्छा, ये भी है कि how to choose friends as well.
यस, दैट्स व्हेन यू लाइक जब आप 13 साल लोगों के साथ रहते हैं तो फिर यू गेट योर फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस के कैसे दोस्त बनाने चाहिए। बट व्हाई डू यू फील लाइक कि पाकिस्तान में बहुत अभी भी एजुकेशन सिस्टम में ना लाइक देयर इज़ लाइक टू मच ऑफ like sides like HSNs and then LUMSs and BNUs and then on the other side ek bilkul do you also feel like especially graduating from there talking to your friends ye wo sara so do you also feel like there is like a huge divide? एब्सोल्युटली। आई थिंक कि किसी भी इंस्टीट्यूट को उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सपोर्ट करता है। अगर आप पुराने जितने भी इंस्टीट्यूट्स देखें दे हैव बिग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे Hmm. वो ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं लोगों के लिए दैट दे लर्न एंड दे एक्सेल। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल्स हैं ही नहीं पाकिस्तान में, और बहुत कम है इस तरह की। प्रॉब्ली पाकिस्तान नीड्स 100 HSN कॉलेजेस। Yeah, सो yeah. और फिर This ये should be the डिवाइड हो normal जाए। thing rather than कि यार मैं कोई बड़े next level को स्कूल में जाना. This should be I feel एक norm हो कि यार like everything is. बिल्कुल, मतलब कितना मुश्किल है। क्या यू नीड यू शुड हैव 3 प्लेइंग फील्ड्स। यहाँ पे स्कूलों में घर बनते हैं और वो पहले Yeah. सुबह वो बास्केटबॉल कोर्ट होता है जो कि शाम को फुटबॉल कोर्ट बन जाता है और रात को वहीं पे कॉन्सर्ट भी हो जाता है। True. सो लाइब्रेरीज तो होती ही नहीं है। Yeah. सो यूजुअली प्रिंसिपल के कमरे में एक दीवार होती है जहाँ पे बुक्स लगी होती हैं। वो भी मुझे मुझे मेरा एक दोस्त था लॉयर, तो वो इंग्लैंड से जब हम पढ़ के आए तो मैं एक दफ़ा उसके ऑफिस गया, तो मैंने कहा यार मलिक साहब ये तो आपने तो वहाँ 3 किताबें भी नहीं पढ़ी थी घर में और आप बन गए बस बैरिस्टर, मुझे पता है कैसे बने, तो ये कहाँ से आई हैं सारी? ही वाज लाइक यार मैं बस वो गया हूँ ये किलो के हिसाब से किताबें मिलती हैं। वाओ। एंड ही एक्चुअली सेड कि आई मीन आई डोंट वांट टू से उस तरह बट लाइक 80-90% जो लॉयर्स की वो कमरे आपने देखा ना वो जो वो जो बिल्कुल फिक्स इंसाइक्लोपीडिया टाइप उनका एग्जैक्टली पड़ा होता वो है। डू यू थिंक ही वाज लाइक डू यू थिंक ये लोग लाइक पढ़ते हैं ये कुछ एक्चुअल मतलब सब बिजनेस मॉडल कि वो जाते हैं और वो दैट्स किलो अ किलो के डिस्प्ले है वो। हाँ वो तो किलो के लिहाज से कि यार ये शेल्फ जो है ना वो पूरी भर आप जाए। पूरी पूरी भर दें। बट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप उस टाइम लाइक डू यू वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर लाइक बचपन में क्या था या वो एक टिपिकल डॉक्टर इंजीनियर वाला एक दौड़ थी लाइक एंड स्पेशली फ्रॉम द पेरेंट्स साइड? So I come from a family where I'm the third generation doctor. ओके मेरे दादा डॉक्टर थे, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं। एवरीवन इन द फैमिली इट्स लाइक अ प्री रिक्विजिट कि आपको एट मिनिमम डॉक्टर तो होना ही चाहिए। सो बट एंटरप्रेन्योरशिप वाज देयर सिंस द वेरी बिगनिंग। नाउ व्हेन आई लुक बैक मुझे उतना उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ, अब होता है। द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट वी यूज्ड टू डू, दोज वर स्मॉल बिजनेसेस दैट वी वर क्रिएटिंग। कुछ भी हो, चाहे वो क्लास के लिए फ़ोटोकॉपी करानी है या कोई और चीज़ है, वी डिड मेक अ मनी मेकिंग एंगल टू इट। ओके लाइक So फ्रॉम योर कॉलेज टाइम से ही? yes, exactly, this was like in O levels। Okay, but So how are it you was making money like? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एंड एक्चुअली दिस इज़ वेरी फनी बिकॉज मेरे साथ जो उस वक्त पार्टनर था वो आज भी मेरा को फाउंडर है। Okay, सो द क्लास टीचर ने कहा कि फोटोकॉपी करानी है सबके लिए, एंड इट वाज लाइक अ हेफ्टी फोटोकॉपी, एंड शी वाज लाइक एवरीवन शुड पे 200 रुपीज़ पर कॉपी टू हमजा एंड ही विल गेट इट फोटोकॉपी। सो वी वेंट टू द कॉलेज फोटोकॉपी वाला गाय एंड ही सेड कि जी 200 रुपये में एक कॉपी हो जाएगी। लाइक let's try somewhere else। सही। So we started looking around and we found someone जो कि मेन मार्केट में 100 रुपए की कॉपी करके दे रहा था। So yeah, we made some money there. We सही, went out on a lunch. But yeah, that was the first instant जब we interesting। thought of something, थोड़ी सी market research की and built a proposition। और उसके बाद your so schooling was from here, then you university के लिए Then I कहाँ? university के लिए I went to Lahore Medical and Dental College where I studied dentistry for 4 years and then 1 साल की mandatory house job होती है। सही। So this was a place where I really learned how to take people out of pain। So when जब आप as a doctor practice करते हैं तो irrespective who the human is, your target is one कि आपने इनको pain से बाहर निकालना है and you have to bring ease into their life। So I think वो बहुत बड़ी learning थी, and coupling that with entrepreneurship, I think ये आपका एक conscious level बढ़ जाता है कि while you pursue to make profits, you don't make it over someone's health। But in your college time as well, like were you thinking कि यार मैंने खुद कुछ करना है काम आगे जाके, या वो था कि नहीं बस यहाँ से फारिग हुए कोई जॉब्स लाइक जॉब इंडस्ट्री में जाना है? सो जब मैं LMDC से फारिग हुआ तब तो एक एम था टू वर्क विद द बेस्ट प्रोफेसर्स, सो उनकी मेंटोरशिप के अंदर काम करूं। बट आई डिड हैव इवनिंग के अंदर कुछ घंटे फ्री एंड आई सेट अप अ स्मॉल डायग्नोस्टिक लैब विच वाज एन ऑफ शूट ऑफ माई फैमिली बिजनेस। ओके। सो वो इतना करता था कि अपने खर्चे सारे पूरे हो जाते थे, कुछ शौक थे वो शौक पूरे हो और वो जाते थे। लैब क्या करती थी? So that lab was an aggregator.
वो 4 लैब्स के बिहाफ पे सैंपल्स कलेक्ट करती थी और पेशेंट को चॉइस देती थी कि आप चूज़ कर लें, एक ही जगह पे आप सैंपल देंगे, बट यू गेट टू चूज़ आपने कहाँ से कराना है। सो एट सही दैट टाइम 15 years ago, it was a convenience for the customers. सही। और फिर वहाँ से सो यू स्टार्टेड वर्किंग विद द प्रोफेसर्स, Yes. और वो कितना टाइम ड्यूरेशन So रफली I यू worked वर्क? for 5 years ओके। with the professors, and then I went to Wales. My wife, who was an NHS doctor practicing there in psychiatry, I joined her, and we thought we were going to pursue our career there. Say, so you basically left Pakistan in a way. Not Yes, left, but like you went for to we find a went to job. explore better Say, but you opportunities. get Yes, married in your job when you were working in Pakistan. yes. So, ठीक है। so the day I got my degree, that is when I initiated the whole process. And 2 years after getting my degree, I was married. सही। So फिर like what was the idea of like moving abroad? Because the profession itself needed a lot of time and a lot of commitment to give it. Pakistan mein professionals are not very well paid. But doctors तो बहुत लोग कहते हैं पैसा बनाते हैं पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा पैसा Okay, कमाते हैं, पाकिस्तान में कमाते हैं, बट फिर वो सोते नहीं हैं. So सही। they compromise their sleep, they Unless compromise you are their like life. 20 years, 25 years का आपका वो हो 30 जाए। years सही। post experience, then you start making money. ठीक But है। जो starting years हैं, those are super tough. सही। So idea ये था कि we go there as professionals. She's a doctor as well. We'll start earning and we'll make a livelihood there. सही। So फिर वहाँ so you went there, you started working, right? किधर NHS में या? So my wife was working in the NHS and I was giving exams to qualify for the dental practice. ठीक है। तो फिर आगे क्या हुआ? So midway there, while we were deciding, and it was like starting from scratch, you start everything new. It just felt that, in Pakistan, we were amongst the privileged few. So considering कि मैं एक middle class से हूँ, we had a good backing back home as well. And जब आप इतने privileged होते हैं कि आपको इतनी सारी सहूलियात मिली होती हैं to grow and prosper, और आपको एक opportunity मिलती है to take a chance, it just felt not right not to take that chance for Pakistan. If I was in a situation के I had nothing in Pakistan, फिर तो वहाँ जाके डेवलप करना बिल्कुल एक बनती थी. बट पाकिस्तान had given us so much. Yeah. My wife had studied from Pakistan. I had studied from Pakistan. हमारी सारी ग्रूमिंग, entrepreneurship की ट्रेनिंग सब कुछ पाकिस्तान में हुआ था. And now when the time comes कि हम उसको यूटिलाइज करें in the actual world, it didn't feel right to leave the country. But then within a year you guys. Yes, within a year we came Wow. back with huge dreams, big ambitions. आप थोड़ी देर बाहर रह लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी एक आ जाता है. So उसके साथ वापस आए. But what was the idea of coming back? मतलब So the idea was that एक stellar patient service शुरू की जाए और जो वहाँ पे एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर पेशेंट को सहूलियात मिलती हैं वो हम यहाँ पे दें. okay. And we उससे पहले यहाँ empower. कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कुछ नहीं था. Okay. So we empower the patients to make informed decisions. डॉक्टर्स को भी हेल्प करें ऑप्टिमाइज करने में टाइम अपना, और पेशेंट्स को भी हेल्प करें इन टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. So technically basic मतलब आप लोगों ने वहाँ idea sort of develop किया, and then you were like okay let's just go back and develop So this. we were sure that what we want to achieve. Okay. What was the way to achieve that goal? That was unclear. So ये हमें ज़रूर पता था कि हम एक stellar experience एक पेशेंट को देना चाहते हैं, बट वो कैसे देना है, that we still had to figure out. But was that not a difficult to start decision because so you went किस साल में? I went in 2018. So उस time sort of boom आ भी रहा था मेरे ख्याल से। I think startups ये वो सारे funding Very भी। initial stages. तो उस टाइम you decided to move back. Yes. और खान साहब भी आगे थे, I think शायद वो भी आपको खींच के लाए हैं। बिल्कुल, खान साहब वो came a little later, but yes, that was a humbling thing to Yeah. know कि the country is There headed is to the right someone, direction. yeah. So उसके so you both moved to Pakistan. We both and moved to then Pakistan. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद we built a COVID PCR lab, which So was suddenly COVID आ yes, गया। COVID आ गया. So जैसे ही COVID आया, it was a huge opportunity. And since I have a family-run diagnostic business, मेरी शुरू से ही training diagnostics में हुई थी. So it was very easy for us to put up a COVID PCR lab. So we built the COVID PCR lab, and that lab became the largest aggregator of samples. So with a single phone call, you could get your testing done from any lab that you want to choose in Pakistan. So it was a one-stop solution for all patients. सही। और फिर वहाँ से आगे so COVID ज़रा चीज़ें कम हुई Yes. सारी। So जैसे ही COVID was
कमिंग टू एन एंड एक रियलाइजेशन हो गई थी दैट टेक्नोलॉजी वाज नीडेड. इवन कोविड के अंदर हमने अपनी रिपोर्टिंग में, अपनी सैम्पलिंग में बहुत ज़्यादा पेपरलेस मैकेनिज़म्स बना लिए और टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन कर दी कि हम किस तरीके से ज़्यादा डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं. सो दैट टॉट अस के टेक्नोलॉजी लीड्स टू एन ईज टूवर्ड्स वट एवर यूर डूइंग. और अगर कहीं पे भी इनोवेशन आनी है, इट कैन नॉट कम विदाउट द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. सो वहाँ से फिर तिब्बी बेसिकली जो है वहाँ वो. से तभी और फॉर्म हुआ. ये नाम कहाँ, आई नो इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम तिब टू प्रोबेबली तिब्बी, बट नाम का आइडिया कहाँ से है? सो इट्स वेरी फनी. मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ कि जब मैं पाकिस्तान आया ना, तो आई रियली वांटेड टू ड्रीम बिग एंड आई वाज लुकिंग फॉर दैट सपोर्ट कि मुझे मिले कि हमजा गो हैड डू व्हाट यू फील लाइक एंड वी आर स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू. सो आई रिमेंबर आई यूज टू फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट दिस अपने भाई से कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ. एंड ही वाज इन द फैमिली बिजनेस. So he was not in the family business. He started his own business, but he's Okay. an established entrepreneur and he's into the export business, right? So I still remember one day, Badabhai came to me and he gave me a poem. Okay. So he said, Hamza, this is a gift for you. So isse pehle he's never given me any poem or any of that sort, and Okay. I'm not that sort jo ke poem padhe. So Is it what, like a book or? no, it's a single pager poem. Okay. So and the heading was, you start dying slowly when, and it's by a poet from Chile called Pablo Neruda. Mm-hmm. So I'll just tell you a few things जिसने मेरी बड़ी thought process को change कर दिया. So वो कहता है कि you start dying slowly when you do not read, when you do not travel, when you do not listen to the sounds of life, when you do not appreciate yourself. You start dying slowly when you stop taking advice, when you stop talking to people you do not know, when you become a slave of your habits. You start dying slowly when you avoid passion and its turbulent emotions, which glisten your eyes and make your heartbeat go fast. You start dying slowly when you become a slave of your habits, when you do not go after your dream, and when you do not allow, at least once in your lifetime, to run away from sensible advice. So this really shook my heart. Wow. So इसके बाद I became so fearless, and knowing कि मेरे बड़े भाई ने मुझे ये दिया है, he's gonna support me with whatever I do. But what is the one thing in the poem which sort of feels like, वो नहीं होता है कि एक हथौड़ा जिसने क्या इसके अंदर से, like what was the one thing which you feel like, yeah, wow? You start dying slowly when you do not risk the safe for the uncertain. So this was one line which pushed me to take the challenges. And if there was any time in my life कि मैंने कुछ करना था, so वो अब था. So I got that and I directly jumped into every part of this poem. I took it to heart और मैंने एक एक चीज़ को फॉलो किया. आप पूछ रहे थे कि तिब्बी का नाम कैसे आया. So एक हमारे रीजन में स्टार्टअप है called Al Tibbi. It's by a founder called Jalil Al-Abadi. So I went on LinkedIn and I randomly messaged Jalil Al-Abadi. और ये कहाँ से? ये जॉर्डन से. Okay. So मैंने उनको मैसेज किया and I said, I have big plans, I have big dreams, I want to do this. Give me some time. And I don't know why he gave me 1.5 hours of his life. Wow. Over the Zoom. Over Zoom, which was the starting of my entrepreneurial journey and startup journey. And I told him all that I wanted to do and what my experience was. And he just told me that you can do it. I've done it here. You can talk to me if you want to. Start off with this. He gave me a lot of advice on how to build a patient-centric business. But I think वो दिन था और आज का दिन I've never looked back. And but what was your sort of, I know you started this, your family is also in the same sort of, domain. But I mean, obviously, like if I ask you this question, you might say, I wanted to serve the people. Like, which I personally sometimes feel like a very cliche because हर business के अंदर ये line ना fit हो जाती है कहीं ना कहीं. But what was your why?
Like, why do you want to do this? Like, because you studied and you understand, or what was like the मैं आपको actual, बताता हूँ. सो you एज अ know? जूनियर डॉक्टर यू गेट अ लॉट ऑफ चांस टू स्पेंड टाइम विद पेशेंट्स. जितनी देर प्रोफेसर साहब आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आप पेशेंट से बात कर रहे होते हैं. और वो टाइम होता है जब पेशेंट्स वो बातें करते हैं जो वो प्रोफेसर्स के सामने नहीं कर सकते. सो मेरे लिए सबसे बड़ा वाई ये था कि द पेशेंट्स डिड नॉट हैव द राइट इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजंस. उनको महदूद इंफॉर्मेशन दी जाती थी फ्रॉम प्रैक्टिशनर्स एंड दे वर टोल्ड टू टेक डिसीजंस. सो मैंने सबसे बड़ा जो वाई मेरी ज़िंदगी में था, हाउ टू एजुकेट द पेशेंट इन टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. और उसकी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज़ वन पाथ दैट आई चूज. सही. और वहाँ से फिर आगे जो है, so उनसे you talk to him, आई टॉक और टू हिम but why एंड did you, I mean it's तिब्बी. fascinating कि पाकिस्तान में नहीं कोई नज़र आया आपको कि you reached out to him on या LinkedIn? सो मैंने पाकिस्तान में भी सब लोगों से बात की. Okay, सो इट्स नॉट लाइक आई ओनली टॉक टू sure. हिम. आई रियली बिलीव कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में आउट ऑफ द स्टार्टअप वर्ल्ड जिन्होंने कस्टमर फेसिंग बिजनेसेस बनाए हुए हैं, दे होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू. सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ मेंटोर्स. सो जितने भी बड़े ये लोग थे, मैं इन सबके पास गया और इन्होंने बड़ी बड़ी मुझे साउंड एडवाइस दी हुई है. एंड इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी एडवाइस हेल्प मी चेंज द होल स्टोरी अराउंड. अच्छा, okay, wow. और फिर वहाँ से तिब्बी शुरू वहाँ होता है, से and this तिब्बी is शुरू हुआ. 20. दिस इज 2021, एंड ऑफ ठीक है, 2021. ठीक है. So Tibbi started as an aggregator of diagnostics, telemedicine and pharmacy. And I think हम लोग probably आसपास ही शायद मेरे ख्याल से. Bilkul. I had just started. I was full Yeah, of passion, and yeah, I came to you, and I yeah. was like, I'm ready to serve 220 million Pakistanis. Wow. We are going to bring a paradigm shift in how healthcare is perceived and delivered in Pakistan. अच्छा, और so talk to me about like जो पहले, let's say the first quarter. So what happened in the first 3 months? So you came up with the idea. पैसे Yes. कहाँ से आए? So this was a time, 2021, when Pakistan was for the first time flooded with investor money. Pakistan was experiencing the tail end of the funding cycle जो दुनिया एक्सपीरियंस कर रही थी. So जब इतनी फंडिंग आई पाकिस्तान में, तो उसका सबसे पहला इम्पेटस वाज टूवर्ड्स द फाउंडर्स कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, बड़ा करो, हम आपको फंड करेंगे. मनी इज़ लाइंग वेकेंट, आइडियाज़ आर नीडेड, एग्जीक्यूशनर्स आर नीडेड. So in the first 3 months, I went to all my friends and my family and I told them about the idea and I gained investment from them. And I was lucky कि मेरे तकरीबन जितने भी दोस्त हैं, 90% of my friends, they all invested in me. Wow. एंड वी बिल्ट अ स्टूडियो जहाँ पे हम एजुकेटिव वीडियोस बनाना शुरू हो गए. हम डायग्नोस्टिक्स की सर्विस लॉन्च कर दी, फार्मेसी की सर्विस लॉन्च कर दी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एक कॉर्पोरेट हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च कर दिया. एंड वी वर बिल्डिंग डिफरेंट थिंग्स. और उसके बाद आप लोगों ने, so इस आइडिया पे कितना अर्सा like you were working, like so before like officially sort of starting, like is it like something which like 6-8 महीने से you guys were working? Yeah, So there the were like pieces, you know. So the feeling of having everyone on the same page came right at the starting of COVID. Because COVID में एक बंदे को टेलीमेडिसिन भी चाहिए थी, फार्मेसी भी चाहिए थी और डायग्नोस्टिक्स भी चाहिए थी. सो वो एक अर्ज पेशेंट साइड से तो हमें बिल्कुल महसूस हो रही थी, बट उसको फॉर्मलाइज करते करते इट टुक अबाउट अ ईयर before we could finalize the plan and put it into place. So I love the branding, by the way, because the first time I think आपने मुझे इस्लामाबाद में, I was like wow. And then I saw the pitch deck or Yeah. the videos were like really really good. और उसके बाद फिर क्या होता है? So it's So end of 2021. 2021. उसके बाद we start moving towards increasing our user base. और एक मेट्रिक था जिसको हम फॉलो कर रहे थे कि यूज़र ग्रोथ होनी चाहिए. एवरी मंथ पहले से ज़्यादा यूज़र्स होने चाहिए. Or you were focusing on Lahore to start with? No, we started with Lahore, but very soon we started operating in Karachi and Islamabad as well. Okay. So through our partners. ठीक है. So हमने ये सर्विस उधर भी लॉन्च कर दी और सिर्फ एक हमारा मेट्रिक था कि नंबर ऑफ यूजर्स मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो. सही. So that is what we worked the whole of the first and the second quarter of 2022. और उस टाइम तक you have raised like good money as well? So उस टाइम तक we had raised money, but there was a constant urge of raising more money because the whole model was a cash burn model.
We were losing money in diagnostics, we were losing money in pharmacy, telemedicine was nowhere near profitability. So एक constant urge थी, तो फंड रेजिंग ongoing चलती जा रही थी साथ साथ. अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, मे बी आई थिंक वो सुनने वालों को या जो स्टार्टअप से लोग देख रहे हैं वो कहें यार बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है, बट आई स्टिल वांटेड टू आस्क. A lot of times, because I am from the media business, so I know कि यार if I am raising $50 million या $1 million, तो यार वो लगेंगे कहाँ. मतलब मुझे पता है कि यार मेरा टेक है या नहीं है, या सैलरीज हैं, वट एवर. अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक व्हेन फाउंडर्स ये इकट्ठा करते हैं पैसे, एंड इट्स लाइक इन डॉलर्स, इट्स नॉट लाइक रुपीज़ वाला. एंड देन स्टिल पीपल से कि यार मुझे अभी और पैसे चाहिए, और लाइक वो बर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो वेयर एक्चुअली इज़ मनी गोइंग? सो लाइक सैलरीज हैं, and when you say tech, you mean like you have a team of, I don't know, like 20 people doing the tech, so उनकी salaries or what? क्या लाइसेंसेज होंगे? सो तीन चीज़ें होती हैं प्राइमरीली जिनके ऊपर पैसे लग रहे होते हैं. एक तो टेक्नोलॉजी बिल्ट में लग रहे होते हैं, वो भी सैलरीज हैं ऑफ द टेक एम्प्लॉयज़. फिर आपकी एक नॉर्मल आपको, और वो काफ़ी हाई वो सैलरीज है. बहुत हाई सैलरीज होती हैं. सो देर अबाउट 4 times मोर देन नॉर्मल एम्प्लॉयज़. ओके. सो और दूसरी तरफ जब आपको ग्रो करना होता है और स्केल करना होता है तो आपको टैलेंट चाहिए. सो उस टैलेंट की हायरिंग में पैसे लग रहे होते हैं. और तीसरे जो सबसे ज़्यादा पैसे लग रहे होते हैं वो एडवर्टाइजिंग में लग रहे होते हैं, वो मार्केटिंग में लग रहे होते हैं. सो ये तीन प्रिंसिपल चीज़ें होती हैं जिनके अंदर पैसे लग रहे होते हैं. सही. और वहाँ से यू स्टार्टेड रेजिंग मनी लोकली या ग्लोबली एज वेल? So we started raising money locally and from locals who were settled abroad. ठीक So है. हमें जितनी डायस्पोरा फंडिंग मिली कम्युनिटी. डायस्पोरा से मिली और यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स से सो मिली. डायस्पोरा से, लेकिन हाउ डिड यू रेज? लाइक वही लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट किया, या लाइक वर यू ट्रैवलिंग? So no, we weren't traveling. We couldn't afford to travel, to be honest. So these were cold messages and friends of friends. कोई acquaintance बीच में निकल आया, warm intro करा दिया, उनसे बात की और फिर आगे चले. वाओ. सो सारा मतलब वो डिजिटल ही चल रहा था. सब इधर बैठ के हो रहा था. और उससे पहले भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स, यू फील लाइक 21-22 में काफ़ी मतलब वो राइज? बिल्कुल. So the healthcare industry saw a lot of startups coming in, and these were heavily funded startups in terms of pharmacy delivery, in terms of telemedicine, diagnostics. हर जगह के अंदर आपको हेल्थ के स्टार्टअप्स मिल रहे थे. और उसमें से काफ़ी आई एम श्योर पिछले 2-3 सालों में फेल भी हुए होंगे, जो बिल्कुल ही क्लोज हुए हैं, या इतने ज़्यादा? Yes. So unfortunately the big guns have gone. So the most heavily funded startups in healthcare, कौन कौन से थे वैसे? आई मीन आई माइट नो द नेम्स, बट Meds and More. They raised about $11.5 million. Wow. And they closed their operations within 24 months. Dawai ne raise kiye, they have closed their operations from major cities. और बाकी भी जो हैं वो बहुत लीस्ट फंडेड है. अच्छा, मुझे दूसरा एक और चीज़ बताएं कि सो जब हमें आता है कि जी अब जैसे आप ये सेट के $11 million, एयरलिफ्ट $80 million, 5 million, 2 million, वट एवर, जस्ट फॉर अ लेमैन, व्हेन यू से कि यार मैंने इतने रेस कर लिए हैं, सो डू दे गिव यू मनी? आई एम श्योर इट्स नॉट के अकाउंट में सारे 11 million आ गए, या इज़ इट मोर ऑफ कि जी एक क्वार्टर के ये हैं, ये आपके टारगेट्स हैं, व्हेन यू विल अचीव यू विल गेट अ सेकंड चंक, थर्ड चंक, फोर्थ चंक. सो व्हेन पीपल से लाइक एयरलिफ्ट ने $80 million उड़ा दिए हैं, या फेल होगी कंपनी, क्योंकि वो 80 million के साथ कनेक्ट है, बट आई एम श्योर उन्होंने 80 तो नहीं ख़त्म कर दिए होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल. सो दिस इज़ वन थिंग दैट रियली गोज अगेंस्ट द फाउंडर्स. परसेप्शन ये मिलती है कि $80 million फाउंडर ने लिए और वो चल निकल गया है. निकल गया है, या उसने खर्च दिए ठीक हैं, है. या उसके बाद उसका कोई हिसाब नहीं है. ऐसे नहीं होता. द मनी इज़ रेज्ड ऑन टर्म शीट्स. पाकिस्तान के अंदर यूजुअली वो टारगेट्स के साथ सेट होता है, और ये 80 million के पूरे इनको 80 million नहीं आए होंगे, इसमें से कम आए होंगे. बट वो ग्रोथ टारगेट्स, एक्सोजेनस ग्रोथ टारगेट्स रखते हैं जिनको आपको मीट करना होता है, एंड देन यू गेट द नेक्स्ट ट्रांच. Got it. और वहाँ से फिर what happened within a year? So 2021 में you started, so you pivoted in 2022 end End of within a year. 2022. Yes. So what happened in that 12 months? So हुआ ये कि जब हमने स्टार्टअप शुरू किया तो इन्वायरमेंट इसका था कि इस तरह का था कि देयर वाज मनी एवरीवेयर, एंड जो टारगेट सेट कर रहे थे बाय द पीपल हु वर लेंडिंग मनी,
दोज वर वेरी वेरी एग्रेसिव टारगेट्स, और वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, यूज़र ग्रोथ के ऊपर, कि यूज़र ग्रोथ कितनी बढ़ती है. दे weren't worried about revenues, they weren't worried about profitability. और उस वक्त फाउंडर्स को एक ऐसा पुश था कि आप बर्न करें, आप मार्केट शेयर एक्वायर करें, वी विल सपोर्ट यू व्हेन एवर यू नीड मनी. अच्छा, ये इन्वेस्टर की तरफ से भी ये आता है? यस. एंड डू यू थिंक, मतलब इज इट अ नॉर्मल थिंग? मतलब इट्स लाइक इफ आई एम एन इन्वेस्टर, मैं कहूँगा भाई ठीक है, मतलब यूजर तो बढ़ रहा है, कुछ पैसे भी तो बनाना है यार. करेक्ट. सो आप पाकिस्तान से हैं, दैट इज़ वाई यू थिंक दिस वे, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई थिंक द इकोसिस्टम फेस एज वेल. हमने सिलिकॉन वैली का मॉडल जो है वो पाकिस्तान में रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि हम हाई बर्न मॉडल्स बनाएंगे, इनके पास हमेशा अवेलेबल कैश होगा, एंड दे विल रीच अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे दे कैन टर्न ग्रीन. बट जबकि वो टर्न ऐसा ग्रीन क्या होगा? लाइक डू दे, लाइक वो सेल कर देंगे वो, लाइक क्या होगा? नो, जब आपकी इतनी बड़ी यूज़र बेस हो जाए, तो अगर आपको एक माइन्यूट प्रॉफिट भी उसके अंदर से आना शुरू हो जाए, तो दैट टर्न्स द होल गेम अराउंड. ठीक है. बट इतनी बड़ी यूज़र बेस तक पहुंचने के लिए यू नीड कंसिडरेबल मनी टू बर्न, राइट. और फिर ये कि अब ये भी है ना कि उस कॉम की कैपेसिटी टू स्पेंड मनी एज वेल. बिल्कुल. मतलब अगर मेरा चैनल है, मैं वहाँ 500 मिलियन फॉलोअर्स भी ले आऊँ, बट हम नेटफ्लिक्स भी, मैं आपका चुराता हूँ, आप मेरा लेते हैं, तो बिल्कुल इट्स सब्सक्रिप्शन स्टिल, मॉडल पे आप नहीं जा सकेंगे. या सो इसी तरीके से हर जगह के अपने डायनामिक्स हैं. आई थिंक वेयर द होल इकोसिस्टम काइंड ऑफ फेल्ड was on making a local strategy towards Pakistani startups and investing in Pakistan. So यहाँ पे you need to have a hybrid model जहाँ पे एक sustainable business model ज़रूर हो पीछे, because there are a lot of things जिनके ऊपर you don't have any control. जो circumstances, चाहे वो political हो, चाहे वो economic हो, devaluation हो, इस हर चीज़ का एक negative impact है on the funding scenario and the growth of the business. और जब इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, तो हाउ कैन यू, आप तो यू आर सेलिंग अ ड्रीम. जब इतनी नेगेटिविटी हवा में फैली होगी, हु इज गोइंग टू इवन लुक एट योर ड्रीम. सो आई थिंक पाकिस्तान फेल टू मेक अ लोकल मॉडल फॉर द होल इकोसिस्टम. और वो कोई भी इंडस्ट्री हो. बिल्कुल. और हम इसी, एंड वी वर विक्टिम टू इट. हम जब शुरू हुए तो हमारा भी ख्याल था कि कैश बर्न मॉडल होगा, हम हैवी एडवर्टाइजिंग करेंगे, पर कस्टमर लूज भी करेंगे, तो इट डजंट मैटर. बट देन one of my mentors, she had a sit down session with me, and she said that your model is not going to turn green anytime soon, and you are trying to lay a primary framework for healthcare in Pakistan. This is what governments do. Do you have the financing? Do you think the circumstances are right? And then she said that you are, making a service for everyone. If you want to go green and if you want to turn profitable, you have to make money from the rich. And Pakistan has pockets of wealth. And that, just lit up a bulb in my head. And I was like, this is the approach. And that is when we went back and started looking at our unit economics. We were making a loss on every sale that we made. And only we know how difficult it was to make that sale in the first place. और जो आप लोगों ने पैसे रेज किए हुए थे वो भी सब खत्म हो गए या कुछ बचे Right हुए at the end. अच्छा, ओके. So we had just this little kitty left. ओके. Either we held on to what we were doing or use that money to pivot. Sahi. And that is when we made the pivot. Wow. And what happened then? So what's the... So the pivot was that we opened up our first medical aesthetic clinic in the biggest fitness center in Lahore. And we started serving patients for medical aesthetics only. और उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना शुरू हो गए. And we started serving patients on whatever their aesthetic needs are, right? And that went so well because we were so focused on the patient कि इनका experience अच्छा हो. We had word of mouth spreading like wildfire. जब हमने pivot शुरू में लिया, we weren't even sure about the pivot. But वो जो word of mouth इस तरह फैला, it took the whole company's attention. और जिस किस्म के उसके unit economics थे, we could finally see a road to profitability. And then at the end of the year, we made the toughest decision on closing all other operations and keeping this operation open. But do you feel like it's altogether a new business? Matlab, I know it's like sort of healthcare, but not the tibbi
टाइप Correct. चीज़, So I think Tibbi या was, लाइक कोई ग्रे एरियाज हैं इन दोनों में? so it is healthcare, and Tibbi's main focus was to build something which is patient centric, to provide a stellar experience to the patient, जहाँ पे हम उनकी पूरी journey को map करें. Now that can be done through multiple ways. The first way we tried was primary medicine, which we failed miserably, and then with the pivot, we wanted to provide all those services in medical aesthetics, which worked. और वहाँ से now you have like multiple sort of clinics across Lahore, right? Yes. So वहाँ से we started focusing just on aesthetics, and we looked at all the pain points that the sector is facing currently. और यहाँ पे एक और भी innovation आई कि and this was a time when no one was ready to invest into Pakistan. So I mean, devaluation was going, the government was unstable. So आप लोगों ने सॉरी पिवट किया जब रफली खान साहब की गवर्नमेंट गई, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी कोलैप्स, यूक्रेन, फलाना ढिमकाना, and that was the moment, right? That was the moment that we pivoted, and we had just the right amount of funds कि हम इस pivot को show करा सकें to investors. So the idea was कि हम pivot करके कुछ numbers show कराएंगे, and then we'll take it to the investors, और फिर investors को कहेंगे now let's double down on this pivot. सही है. Unfortunately, जब हमने उसको pivot किया और हमारे पास substantial numbers आए, which were very reassuring numbers, the May incident had happened. And एक नई डायमेंशन में सर्कमस्टांसेस चले गए. आई मीन दैट देयर वाज नेटवर्क आउटेजेस, देयर वर इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस, और आप तो बैठे पॉलिटिकल भी सेंटर में इंस्टेबिलिटी हैं. थी, डिवैल्यूएशन हो रही है. इट वाज अ मैस, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उस वक्त किसी ने एंड वी डेस्परेटली नीडेड फंड्स. सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, डू वी ओपन द राउंड और डोंट वी ओपन द राउंड. So we deliberated a lot on to open a round and not, but we came to the conclusion that if there is any right time for us, it is today. And we went on with opening the round, and we started emailing, messaging any and everyone we could. और फिर लोकल इन्वेस्टर्स आए या बाहर से ज़्यादा? कोई बिकॉज भी लोग नहीं आया. अच्छा, ओके. Yeah, we found no one. Okay. And that was a blessing in disguise as well. So because फिर हम back to the drawing board चले गए कि हम क्या करें, हम इसको कैसे सोचें. But अब तक एक बहुत कार्डिनल चीज़ फ़र्क हो चुकी हुई थी. So by now I had two co-founders working with me. So the first one was my wife, Dr. Sara, who is a trained doctor from the NHS and knows what a stellar experience means. And the second is my childhood friend Ahmed. So Ahmed has worked in companies like Amazon and Uber, and he understands how to take a business on scale. So पहले जो एक दिमाग सोच रहा था, there were three minds thinking of solutions, and we came up with the most innovative franchising model. And we thought that अगर हमने पैसे ही रेस करने हैं फॉर हमें ग्रोथ के लिए चाहिए, तो हम लोकल इन्वेस्टर्स को फ्रेंचाइज ऑप्शन देंगे. एंड व्हेन वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस, the fire spread like anything. We were getting calls from local investors. ये जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जो डॉलर्स खरीद के रख लेते हैं, जो गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, उनको हमने एक अपॉर्चुनिटी दे दी जहाँ पे आप बैंक को भी बीट करते हैं और आपको परपेचुअल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ रिटर्न्स मिलते हैं. सो आई थिंक उनको प्रॉबली लग रहा था कि यार ये हमको स्टार्टअप में भी नहीं फंड कर रहे, ये एक्चुअल बिजनेस ले रहे हैं, ऑन ग्राउंड बिजनेस है जो आपको मंथली रिटर्न्स देगा, एंड बेटर देन व्हाट ऑल अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर गिविंग यू. लाइक मोर देन द रियल एस्टेट. Yes, more than the real estate, more than the bank. The bank, mind you, is giving you 22% today. That was a big benchmark to meet. Like ऐसी circumstances के अंदर पैसे raise करना is the toughest. जब इतने ज़्यादा interest rates हो. Because हर बंदा prefer करता है मैं बैंक में पैसे रखवा दूँ. It's safe, right? So we still managed to convince them to put in franchises, and now our growth is entirely on getting local investors and building these blocks. We've built 3 already. We're on to building the 4th. Wow. और उसमें now you're not like उस तरह raising for the company. So we continue to raise in order to build the technology. So there is a huge technology play. So we really feel that the biggest pain point in medical aesthetics is how to quantify aesthetics. आप डायग्नोस्टिक्स में होते हैं तो आपको फ़ौरन एक नंबर मिल जाता है. आपका लिवर फंक्शन टेस्ट हाई है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाइयाँ देते हैं. आपका लिवर फंक्शन टेस्ट बेहतर हो गया, गुड डॉक्टर, ही गेव यू अ गुड ट्रीटमेंट. नहीं ठीक हुआ, यू गो टू समवन एल्स.
but you can hold the practitioner accountable and you can quantify your progress. This was missing in the aesthetic world. So we're building technology today that tracks your progress. So 6 months down the lane, you can go and hold your practitioner accountable that, this is how I looked. 6 months of your treatments, I'm here. Like, where does the difference lie? So to make it more easy, basically, what I am understanding is what happened is कि ऐप में मैंने अपनी पिक्चर ली और उस पिक्चर ने मुझे बता दिया कि जी क्या आपकी एक्नी है, क्या क्या चीज़ें सारा, एंड नाउ आई गो टू यू एंड आई कैन आस्क यू कि यार मैं तुझे भाई 6 दफ़ा पैसे दे चुका हूँ या 6 सेशंस 10 सेशंस हो चुके हैं, व्हाट्स द प्रोग्रेस, इज दैट राइट? सो देयर टू डिफरेंट थिंग्स. पहली तो ये कि हम आपकी प्रोग्रेस को हर आपकी अपॉइंटमेंट पर ट्रैक करेंगे ताकि आपके पास एक मंथली रिकॉर्ड आ जाए. दूसरी जो आपने ऐप वाली बात की, सो अ वेरी इंटरेस्टिंग बिट इन एस्थेटिक्स इज कि हमारा रीजन compared to the rest of the world is growing 40% faster in terms of medical aesthetic procedures. Okay. और जो acceptance to medical aesthetics है, that is grown by 80%. So that brought us to the conclusion that people want to get these things done, but they don't know what the effect would be या कितनी transformation आ जाएगी. So the app that we are building is you'll take a selfie. पहले तो विद ट्रेन्ड एल्गोरिदम वो डिटेक्ट कर देगा कि आपके प्रॉब्लम्स किधर हैं, Okay. और आपको एक ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट कर देगा. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट ट्रीटमेंट प्लान, And this is all free. yes, Okay. and when you click on that treatment plan through generative AI, it would show you कि how would you look, right? Wow. And that would compel you to go to a medical aesthetic clinic and get these things done. सही. और अच्छा, इंटरेस्टिंग. सो वहाँ आपको एक फ्री में बिफोर एंड आफ्टर आ गया, Correct. and then you guys get the data and then you start making calls या like बिल्कुल. sort of leads आपको आ गई हैं लीड्स वहाँ आ से. जाती है और हम वहीं से रीडायरेक्ट करते हैं टू आवर क्लिनिक्स. सही. So that's what's happening right now. Yes. और अब what's the sort of the next step? So you have 4 clinics now. Yes. So in terms of clinics, we have 4. We aim to take this number to 28 in the next 24 months, Okay. which covers the major cities of Karachi, Lahore, and Islamabad, and then the region, which is Dubai and Riyadh. So we believe if we build this starship here, we can take this starship to the region as well. But और आपको हमने- लगता नहीं कि दुबई और सऊदी में तो कुछ मतलब that's like they are so much ahead of us उस तरह, especially in terms of the beauty and terms of like these technologies. So in terms of acceptance to aesthetic treatments, yes, they are way more accepting than us. In terms of the quality of services being offered there, they are at par with us. In terms of use of technology, they are behind us. Okay. So मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि currently we've achieved 70% accuracy in detecting freckles and acne. In the next 10 to 12 months, and that is why we're raising funding today, if we are able to master this AI diagnosis, I think we would have a very clear USP. हमने on ground रियाद में भी और दुबई में भी जाके अपनी रिसर्च किया है. The market is ripe, the competition is tough, but if we build this technology, inshallah there's nothing stopping us. Wow. अभी हमने रियाद और ये दुबई की बात की. हाउ डू यू सी ये जो मिडल ईस्ट का पूरा स्टार्टअप एक बूम, तो मैं नहीं कहूँगा, आई थिंक दुबई तो बहुत प्रॉब्ली थोड़ा पुराना ही हो गया, बट सऊदी इज़ प्रॉब्ली समथिंग, मेरे ख्याल से जो एक सऊदी स्टार्टअप सिटी भी वहाँ बन रहा है, टेक सिटी, आई थिंक सिलिकॉन वैली टाइप का. और आई थिंक पता नहीं, मैं आपसे शायद डिस्कस कर रहा था जो $1,500 या $2,000 दे आर पेइंग टू द स्टार्टअप्स. Yes, जो नियोम के अंदर अपना ऑफिस खोलेंगे. थोड़ा सा ये बताएं ये क्या सीन है. So, Saudi sovereign funds जो हैं, they are picking startups today जिनको वो monthly एक sponsor देते हैं with the guarantee that when Neom city खुलेगी तो they will go and open a office there. So today they are building or they're putting the foundations of all the companies that are going to be opening in their new city. And is this like equity या क्या? Yeah, it's more of a grant model. This is more of a grant, but they have a rigorous process जिसमें वो check करते हैं और आपको select करते हैं. Wow. So and do you feel like Dubai से ज़्यादा like Saudi would be the center point? Yes. I think this is we are very lucky to be present in this time and in this region. So I think the present day Rome is coming to our neighborhood. ये पहले people probably had to go to New York or London or Singapore. Now all that is coming to our region. और अगर कहीं पे हमें with
कह लें कि आसानी से वीज़ा मिल जाएगा, वो ये रीजन्स हैं, राइट? सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फाउंडर्स लाइक अस to go into the region where the whole world is coming and test their metal out. एंड आई थिंक बीच में हम लोगों ने बात की, बल्कि आपने मेंशन किया कि मेंटरशिप वाली, लाइक यू हैड अ लॉट ऑफ मेंटर्स. आई फील लाइक कि ऑफ कोर्स लाइक नो वन, लाइक वो देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन कि यार मेंटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है वो सारा, बट हाउ डू यू फाइंड मेंटर? एंड वर्किंग विद द मेंटर इज़ अ साइंस, राइट? इट्स नॉट लाइक, मतलब there is no formula to it. Yeah. And a lot of time I think बहुत सी mistakes you can avoid. So how is your experience, and like what would be your advice to the new sort of startups? So getting hold of mentors is very tough. So it is no less than, chasing a girlfriend who doesn't like you. So you keep messaging them, you keep pestering them. I sometimes tend to get emotional as well. मैं तो emotional messages भी कर देता हूँ just to Okay. get their time, सही. right? And but I think that no mentor says no to someone who wants to learn. So the satisfaction that you get by teaching someone or passing knowledge, I think that is what mentors are looking for. And if you actually take their advice seriously, so पहली दफ़ा तो आपको mentor के साथ time मिलना is easy. The difficult part is the second time, because they would be keenly looking कि आपने last advice पे कोई act किया है. True. And if you do, only then they will give you a second chance, वरना they won't. और एक और चीज़ आपने कहा कि one of your co-founder is your wife. So how is that sort of relationship? कि घर, मतलब like you guys are a couple and then in the business as well. So how, like वो जो पूरा work life balance, so how does that sort of पूरी चीज़? So it's worked really well for me. That is primarily because I knew my wife before we got married. So कुछ ज़िंदगी के ख्वाब इकट्ठे देखे थे, उनको अचीव किया, थ्रू आवर एजुकेशन अचीव किया, डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव किए, एंड एक 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 वो थॉट प्रोसेस बन गया हुआ था दैट टुगेदर वी कैन अचीव द हाईएस्ट ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्कर देम. सो और जब उसको हमने अपने बिजनेस पे अप्लाई किया, सो वो बड़ा हेल्पफुल रहा, एंड टुडे वी एक्चुअली नो वेयर आर सिनर्जीज लाई. एक दूसरे को स्पेस देना भी जानते हैं, एक दूसरे को एड और सपोर्ट करना भी जानते हैं. एंड आई थिंक कि टुडे जब हम विद इन द इकोसिस्टम घूमते हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं who are working together, and they're progressing like no one's business. But how do you pair would do the work life balance? मतलब घर जाके भी, are you guys still talking about the business here? Do you have like boundaries in a sense? So to be honest, abhi to we are. Okay. So we want to establish that ठीक boundary, है. but I think the business is too young currently. थोड़ा सा grow करेगा तो वो boundaries ज़रूर करेंगे. सही. But अभी it's lot about work. सही. And पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को ये जो पूरा इकोसिस्टम है, like how do you see that now? Like let's say for the next like 3 to 7 years, to 2025 and then 2030, do you feel like the investors will come back? Of course, depending on the economy, the political situation, the security situations, but where do you see like what's going to happen? So I have a lot of optimism for Pakistan, right? So I believe that Pakistan has a lot of talent, and it has its own unique set of opportunities that you need to really decipher and make good use of. So I think Pakistan currently is going through one of its worst times. This gives founders time to work on their product market fit and listen to their customers. The situation is going to improve. There is no reason why it's not going to improve. We are a big market. We hold a space in the region. The world is coming to the region. We will have a spillover effect. So I believe कि ये वाला time गुजर जाए, and the resilient founders who get through this time have a great future. So when the investment is going to flow into Pakistan, the resilient founders who've made it through would have built businesses which have a perfect product market fit, and they have an ever growing client base. So they would be in a very good situation to accept that money and to deliver on the targets as well. And what would be your message to the startup founders, let's say जो अभी तक एक तो खड़े हुए हैं, जो थोड़े से रह गए हैं, और जो I don't know जो शुरू करना चाह रहे हैं? What would be your advice to them or suggestions? So my primary advice would be dream big. So one thing that I've been super let's say, how do you put it, I think क्या word इस्तेमाल करें, super
like privileged ही कर लें. नहीं, वो शुक्र. प्रिविलेज में ना वो आ जाता है कि यार इसके पास तो पैसे हैं तो ये Yeah, तो so बात. I'm like thankful too for. So that's, I think, something that's really worked for me is the support mechanism which has allowed me to dream big. As founders, you are believers. You are the people who are going to build the future of Pakistan. No one can see what you can see. It is very difficult to even, give them a glimpse कि आप क्या करना चाहते हैं with the projections. आपको पता है और आपका belief है. You don't need the whole world to agree with you. You need to agree with it and you need to hold your ground. And it is a very interesting juggle between holding ground and then changing your stern views with the circumstances. थोड़ी सी molding capacity भी अपने अंदर रखनी है on making data driven decisions. Everyone in the world can lie to you. The data cannot lie to you. So be firm on what you want to do, dream big, and the closest person to your heart should be your clients. They will define who you are, what your business is going to be, and where do you go from here onwards. Wow, amazing. Hamza, thank you so much. Thank you, Talha. And good luck with the new sort of clinics and the big vision plan. And I hope, inshallah, you will achieve everything I can see in you. And I think like you are sort of बहुत कम अब ज़ाहिर स्टार्टअप्स हैं like जो थोड़ा सा होप कॉम को और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को दे सकते हैं, बिकॉज यू गाइज आर, या हम लोग काम करें, वी आर नॉट लाइक दैट बिग कि बिकॉज एक तो ये ना कि जी पैसा है तो बस आप कर ही जाएं. सो वी आर लाइक सॉर्ट ऑफ, मतलब वो गिरते हैं उठते हैं गिरते हैं उठते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील लाइक. बिल्कुल. सो आई थिंक एज अ फाउंडर सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि अपना बिलीफ स्ट्रांग रखें एंड देन बिल्ड अ टीम. एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्लिनिक बना लिया, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट कर दी. इट्स अबाउट पीपल, it's about innovation, it's about passion, it's about perseverance against all odds. So ये टीम जिस दिन आपके पास बन जाती है, and alhamdulillah I'm pretty confident that today we've built that team, then you can conquer anything. Yeah. So that's the aim, that's the ambition. Or inshallah we will take this brand with the Pakistani flag on top of it to all the countries in the region. Inshallah. Thank you so much, Hamza. Thank you, Talha.